Hmm. So, culture medium preparation. This is the first long question. This will be a long question. So let us. What is culture medium? The explant is placed on a nutrient-rich medium containing plant growth regulator, PGRs like auxin or cytokinin, which stimulate the cell de-differentiation. As we know, when we culture an explant, what is explant? Like if we cut some part of, be it a leaf, be it a stem, a root part, anything, small little sample part of a plant, and from that small part we from that small totipotent part we develop a whole new plant. That is called as a explant. Means it is a little sample or of a tree, may it be root or stem or any part of which is taken to culture in a media to grow a whole new plant, develop into a new plant. So induction medium, for that 0.8% agar solidified full strength ms medium plus 1 mg 240 plus 5% sucrose, this is sexual. So how will a tree grow, or how will that explant? So first of all, we will develop callus. The plant will develop into callus. Now what is callus? Callus is an undifferentiated mass of cell. That means cell de-differentiate. Now, what is the difference between de-differentiation and re-differentiation? De-differentiation means like if a specialized part of a plant get converted into a generalized part or a bigger part. Mm, how? The, for example, leaf uh, the explant of a leaf part, it is a small part, it is a specialized cell, leaf cell. But when we culture into the media, that will be de-differentiate. De-differentiate means that will become a generalized cell. I mean, it will function as a cell only, not a leaf cell. So from that cell, I mean, see, leaf is a specialized organ, and that specialized organ cell will de-differentiate. That means it will slowly come into the generalized structure of a cell, and from that cell it will again re-differentiate. Re-differentiate means from that generalized cell it is again going towards the specialization. That means uh, root formation, shoot formation, leaf formation, stem formation. So that redifferentiation part is again a cell going towards the specificity. And this de-differentiation means a cell will become de-differentiate. De-differentiation means general cell banna, totipotent. Okay. To form, okay, so cell de-differentiate, that means it will lose its the specific function to form a mass of a undifferentiated cell called the callus. Auxins and cytokinins are given in different concentration. Why? Because उसको थोड़ा सा देखना है, like if we want to produce root, if we want to produce shoot, इसको देख ही देते हैं. Auxin promote what? Auxin, auxin promote क्या है ये? टिश्यू कल्चर. Okay, see. The auxin facilitates cell division and root differentiation. Okay, so generally what happens that auxin are present in the
uh, tip part. Auxin generally promotes the growth of a plant, but here in the tissue culture, auxin facilitate cell division and root differentiation. Auxin induce cell division, cell elongation, and formation of callus in culture. For example, 2,4 dichlorophenoxyacetic acid is one of the most commonly added auxin in the plant cell culture. So, if auxin is promoting root, then the cytokinin will be promoting the shoot growth there. यहाँ पे देख लेते हैं, दिस इज नॉन एज अ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर. हाँ, यहाँ पे देख, यहाँ पे the auxin facilitates cell division and root differentiation, while the cytokinin induces the cell division and differentiation. Cytokinin promote RNA synthesis. ये वो पे दिया नहीं है. Okay, now similarly, auxin root and cytokinin promotes the growth of in plant tissue in tissue culture. cytokinin, हाँ, shoot organogenesis. Auxin root organogenesis and cytokinin it will be shoot organogenesis. It will increase the upper part. So let's see. Auxin and cytokinin are given in the different concentration. Other additives such as the sucrose are added to provide energy, and sometimes antioxidants are included to protect cell from the stress. Now see, what is the process of callus formation? Um, Procedure of callus formation. सब इसको मैं तुम्हें ये दिखा देता हूँ. द प्रोसेस इसका थोड़ा सा उतना नहीं क्लियर हूँ. So this is a long question. Somatic hybridization, single plant to plant. Okay, so zygotic and आगे somatic embryogenesis. तो नहीं थी. ये नहीं है. क्या था? Callus formation. Chat GPT. Callus plant tissue. Plant. So it will especially in micropropagation and genetic modification. हाँ, तो कैलस कैसे बनता है? How callus is made? Explant selection and preparation. A small piece of a plant tissue known as explant, often taken from leaves, stems, root and buds, is selected and sterilized to prevent contamination. The explant is then हाँ उसका surface sterilization होगा, because we have taken a plant and in that might be microbes and bacteria will be there, so it is surface sterilized. What is the process of surface sterilization? Like we wash it in water, we wash it in alcohol, 70% alcohol, then also sodium hypochlorite also used. So these are the some methods of surface sterilization. The explant is then placed on a nutrient-rich medium which supplies the necessary nutrients, hormones and vitamin. हाँ, फिर वो explant को surface sterilization करने के बाद we'll put in a nutrient medium. Then induction of callus formation.
The nutrient medium is supplemented with plant growth hormone, especially auxins, and it is a 2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, and cytokinin in specific ratio. For example, I mean specific ratio in the sense the shoot will be more, थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होता है तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा कंटेंट देना पड़ेगा. रूट उतना नहीं चाहिए होता है तो इट इज़ लाइक रूट इज स्मॉल comparative to the shoot, so less amount of oxygen will be there. Oxygen stimulate cell division and elongation, while cytokinin encourage cell proliferation. The balance between these hormones is crucial between the callus induction. In response, the explant undergo de-differentiation. De-differentiation means where a plant cell revert to a less specialized meristematic state. That means earlier, from where the cell is taken, it is more specialized one, leaf, stem, etc, etc. But now, when the cell induction means when we put it in a nutrient medium and when we put it the oxygen and cytokinin in a specific ratio, the plant will undergo de-differentiation. That means it will revert to a less specialized and it will become a meristematic cell, forming an unorganized mass of cell known as a callus. This is known as a callus. It is a undifferentiated mass of cell. Callus proliferation फिर कैसे होगा? Once the callus forms, it continues to grow and proliferate in a medium supported by ये. फिर differentiation and organogenesis. फिर ये देखो ये आता है by adjusting hormone ratio, higher cytokinin for shoot formation, higher oxygen for root formation. फिर हमने रूट थोड़ा सा बना दिए. सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस ये जो है ये अभी ये दिस इज़ द लॉन्ग क्वेश्चन आई हैव रिटन टुडे. फिर उसको हम एक्लिमेटाइजेशन ये मैं बताता हूँ आगे. तो फोटोस ओके. So we have okay, so subculture callus. How we culture the callus? We will transfer the explant to a nutrient medium. Will provide it a controlled growth controlled growth environment. They are placed under controlled growth environment, usually in a low light condition or darkness, to optimize the callus formation. फिर we will also monitor that observe callus formation and choose a healthy callus showing embryogenesis potential. तो जितने भी callus there will be of like we have taken explant, we take some 5 to 6 explant, and out of that which one is producing a healthy callus, and out of which the healthy one and the best one is taken for the further step. Now somatic embryogenesis. The somatic embryogenesis is the process by which somatic cell differentiate into the somatic embryo. For example, there are the two type. One is a direct and another is indirect. Direct में क्या होगा? Direct में explant means the small sample which we have cut from the plant, be it leaf, be it root or any part of the shoot, that will be a direct, somatic embryo उसमें already होंगे maybe. Somatic embryos formation on explant surface, and this will directly lead to germination and then to plantlets. Indirect में क्या होगा? Indirect में we will make it a callus. We will put it in the nutrient medium callus. फिर the callus will become a somatic embryo. Then germination, then plantlets. So जैसे कि ये यहाँ पे होगा प्लांट रीजनरेशन थ्रू सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस. ओके, तो हम कहाँ पिछला में कहाँ छोड़ा था? हाँ ये था अभी. नाउ लेट अस सी व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस. There are basically 4 steps of somatic embryogenesis. 1, induction. 2nd, development. 3rd, maturation. 4th, germination. So let us see one by one what is in the induction phase. Induction phase is like
This phase involves manipulating the plant tissue and environment to initiate de-differentiation embryo. This step includes the selection of explants, induction to introduce the first step. Identify a part of plant that can be easily induced and undergo somatic embryogenesis. It may include young leaves, hypocotyle, cotyledon, root, shoot of and anything. Then उसको हम surface sterilize करेंगे. It is done to obtain a contamination free presence of any bacteria or fungi. The presence of any bacteria or fungi can hinder the embryogenesis process. So how we will do that surface sterilization? We will rinse it by water, or we can use disinfectants like ethanol, sodium hypochlorite, or hydrogen peroxide to sterilize the explant for a certain time period. Then we will it wash with sterilized distilled water to remove the yeah. So this completes the step 1 introduction. In the induction process, what we will do, we will take an explant and we will surface sterilize it with that. Then what happened, the developmental process of somatic embryogenesis. पिछला इतना ही तो था, हाँ surface sterilization. Okay. Then this is, there are 4 phases. How can we develop? Phase 0, phase 1, phase 2, phase 3. Cells become competent in presence of auxins. Phase 0, when we'll put the auxin promote root induction. Competent cell have the ability to develop somatic embryo when auxin are removed from a medium. इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आई एम नॉट एबल टू लिंक इट. आसान भाषा में मुझे ये नहीं आ रहा है, थोड़ा सा बस याद रटा जैसे थोड़ा सा, क्योंकि फेज 0 में ऑक्सीजन्स हम डाल रहे हैं. देन हम ऑक्सीजन्स, बिकॉज इट वाज द स्टार्टिंग फेज में भी, तो ऑक्सीजन डाल रहे हैं, फिर सेकेंड फेज में ऑक्सीजन को निकाल देते हैं. कॉम्पिटेंट सेल हैव द एबिलिटी टू डेवलप. फिर इसको जैसे ऐसे कि एक छोटे बच्चे को चलने के लिए कुछ स्टिक पकड़ा दिए, बाद में स्टिक निकाल लिए, तो वो छोटे बच्चे अपने आप ही चलने लगने का सीखेगा एटलीस्ट, ऐसा. तो आई थिंक इसका कॉन्सेप्ट तो पता नहीं. ऑक्सीजन एक बार डाल देने के उसको रिमूव कैसे करेंगे, दैट विल तो गो इन टू द सॉइल या फिर कल्चर मीडिया, मे बी कल्चर मीडिया हो सकता है. यस, फिर इसका फोटो देखते हैं. ये देखते हैं, ये रुक जा, हाँ ये हो गया. हाँ, सोमेटिक एम्ब्रियो फॉर्मेशन ऑन एक्सप्लांट सरफेस, इट विल जर्मिनेशन. तो ये देखो, ये डायरेक्ट एक्सप्लांट से, हाँ ये टच हो रहा है ना, तो ये डायरेक्ट एक्सप्लांट से जर्मिनेट हो रहा है. ये इसको कैलस बनाना पड़ रहा है, फिर सोमेटिक एम्ब्रियो, फिर आगे इसको germination होगा. Then okay, coming here, developmental process of somatic embryogenesis. 4 phases can be recognized during somatic embryogenesis. Phase 0, cell become competent in presence of auxin. Phase 1, competent cell have the ability to develop somatic embryo when auxin is removed from the medium. Okay. Phase 2, rapid cell division occurs in cell cluster leading to the formation of a globular stage and a stage somatic embryos. Phase 3, plantlets develop from the globular embryo by heart, cotyledonary and torpedo shaped somatic embryogenesis. अभी इसको ऐसे देखते हैं. देखिए, तो हम क्या करेंगे, what we'll do, we will do first add auxin. The cells become competent, then remove auxin from the medium. Maybe हम जो liquid medium में auxin डाल रहे थे उसको we can remove and let the plant alone establish itself. Then what will happen, that the explant will start rapidly dividing among itself. Rapid division of cells will occur, and that rapid division of cell will lead to a globular stage. Now how globular stage looks like, let us see. It will looks like a globular stage. ये देखिए globular stage, ये like if from one explant it have divided so many time and what it become as a globular stage. फिर globular stage के बाद आएगा heart shaped stage. इसको देखिए, ऐसे करके ये ऐसे है, heart shaped, दिल जैसा shape, hence it is called as the heart shaped. फिर उसको फिर आएगा torpedo stage. टर्पिडो स्टेज, जैसे कि इसमें मेरे में बनाया हूँ, अरे कट गया.
Hmm. So, like see, this is differentiated or the vacuolated cell, somatic cell. This will divide into undifferentiated smaller cell. ओके, कैलस बन गया, अनडिफ्रेंशिएटेड स्मॉलर सेल में कैलस बन गया. फिर ये ना रैपिड डिवीजन होके ये बनाएगा ग्लोबुलर स्टेज. फिर ग्लोबुलर स्टेज से आएगा हार्ट शेप्ड स्टेज, अभी जैसे देखिए. फिर आएगा टॉर्पीडो, फिर यहाँ से बनेगा प्लांटलेट. प्लांटलेट स्टेज. फिर नेक्स्ट में क्या आएगा, मैचुरेशन. देखो, इंडक्शन गया, डेवलपमेंट गया. इंडक्शन, डेवलपमेंट, अब आएगा मैचुरेशन, फिर होगा जर्मिनेशन. तो मैचुरेशन में क्या होगा, इन मैचुरेशन is the key phase between embryo and germination. During maturation, several storage synthesized which is necessary for the germination. Germination इसको मैचुरेशन में it will become mature. How? मैचुरेशन देखिए, एस टी शॉर्ट टर्पिडो, लॉन्ग टर्पिडो, ई टी. सो इट विल बिकम ए टर्पिडो स्टेज. दैट मीन्स थोड़ा सा मैच्योर हो रहा है, इसमें ज़्यादा नहीं लिखा. मैचुरेशन इज ए की फेज बिटवीन एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड जर्मिनेशन. ड्यूरिंग मैचुरेशन सेवरल स्टोरेज प्रोटीन सिंथेसाइज्ड. स्टोरेज प्रोटीन which will be necessary for the germination of the somatic embryo. Okay, in maturation it is making it's cooking its food, so that mm, it is producing several storage protein which will be necessary for germination in somatic embryo. आगे आने पे it will provide the energy or the food to हाँ जर्मिनेशन प्लांट. अब देखो, जर्मिनेशन ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियोस एंड प्लांटलेट डेवलपमेंट. ये फिर एस एच शो डेवलपमेंट. एस एच क्या होता है, ये फिर धीरे धीरे ऐसे करके बढ़ गया, प्लांट जर्मिनेट होने लगा. आफ्टर सम टाइम जर्मिनेशन मीडियम 0.8% एगर सॉलिडिफाइड हाफ स्ट्रेंथ एमएस मीडियम प्लस 3% सुक्रोज. इसका एक फॉर्मूला है. जैसे इंडक्शन में क्या था, इंडक्शन में 0.8% एगर प्लस 2,4-D. डी मीन्स ऑक्सिन, 2,4-D ऑक्सिन्स प्लस 5% सुक्रोज लेते थे. फिर आ गया क्या एक इंडक्शन में इतना. फिर हमारा डेवलपमेंट फेज में भी 0.8% अगार प्लस उसमें हाँ 3% सुक्रोज. इसमें भी नहीं, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं. ये देखो, डेवलपमेंट मीडियम में क्या है, 0.8% अगार सॉलिडिफाइड ग्रोथ रेगुलेटर फ्री फुल स्ट्रेंथ एमएस मीडियम 5% सुक्रोज. 5% सुक्रोज. जर्मिनेशन में हम लेंगे 3% सुक्रोज. 0.8 अगर सॉलिडिफाइड हाफ स्ट्रेंथ प्लस 3% सुक्रोज. इनडायरेक्ट सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस. दैट मीन्स यहाँ पर देखिए, दिस विल नॉट फॉर्म कैलस. यहाँ से ही सीधा एक नया प्लांट इट हैव द एबिलिटी टू ग्रो. जैसे कि ये छोटे छोटे स्पोर ले लिए होंगे, छोटे छोटे स्पोर, ये इंडिविजुअल सेल. हाँ, ये देखो, ये है ये ऐसे होगा डी डिफ्रेंशिएशन. ये एक स्पेशलाइज सेल बन रहा है, एक कैलस की तरह, एक मेरिस्टम जनरल. हाँ, यहाँ से फिर बनेगा डी. यहाँ पे देखो धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है. ग्रोथ होके पहले शूट बना, फिर हम इसे कहाँ गया, ई के बाद एफ. यहाँ पे हार्ट शेप आएगा, ये टॉर्पीडो स्टेज बोलते हैं इसे. टॉर्पीडो स्टेज. फिर जी, फिर इसे हाँ, ये जो नीचे वाइट जैसे दिख रहा है, दिस आर द न्यूट्रिएंट मीडियम. लाइक ये न्यूट्रिएंट मीडियम में अगर हम ऑक्सीजन डालेंगे तो इट विल प्रमोट द रूट डेवलपमेंट. इसमें साइटोकिनिन डाल देंगे ज़्यादा तो ऊपर का पार्ट बढ़ेगा. फैक्टर अफेक्टिंग सोमेटिक.
हाँ, फिर क्या करेंगे देखो, एक्लीमेटाइजेशन। नाउ द प्लांट हैव बिकम, नाउ व्हाट विल डू, एक्लीमेटाइज, और इट इज नॉन एज द प्राइमरी हार्डनिंग. एक्लीमेटाइजेशन एंड हार्डनिंग मीन्स लाइक, इसको लाइक इफ समवन हैव टू गो टू स्पेस, देन उसको उसको एक आर्टिफिशियल स्पेस रूम में प्रैक्टिस कराया जाता है, दैट ऐसे ऐसे प्रोसेस. और लाइक इफ़ ए पर्सन हैव टू गो टू वेरी कोल्ड एरिया, अंटार्कटिका जाना है उसे, तो एक ठंडे रूम में उसे कुछ टाइम तक रखा जाता है, उसके बॉडी को एक्लीमेटाइज करते हैं. तो प्लांट के केस में भी वो थोड़ा सा एकदम बाहर नेचुरल कंडीशन में जाने से पहले वी विल हार्डनिंग इट. हार्डनिंग, हमारे सर इसमें एग्जांपल देते, तुम्हारा भी हार्डनिंग चल रहा है, खाना नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, ये नहीं मिलता बोलते हो. हाँ ठीक है, कोई बात नहीं. हार्डनिंग प्रोसेस, जब तुम रियल वर्ल्ड में जाओगे तो हाँ, उतना वो नहीं लगेगा. अब सहो ये सब, ऐसे बोलते थे, ऐसे बोलते हैं. तो acclimatization of regenerated plantlets and field transfer. So we will do acclimatization under lab condition and under field condition. Applications of somatic embryogenesis, large scale propagation. We can like produce more number of cell, more plantlets. It is a large scale propagation, in vitro conservation, in vitro selection, genetic transformation. So these are something. ये हो गया, हाँ ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये इनडायरेक्ट डायरेक्ट ये भी हो गया. ये कैलस आता है इसमें बीच में, इसमें कैलस नहीं आता है. फिर हार्डनिंग, फिर ये सेम प्रोपागेशन, कंजर्वेशन, ट्रांसपोर्ट, कंक्लूजन. सम एम्ब्रियोजेनेसिस opportunity to develop efficient propagation system in a large number of angiospermic gymnospermic plant. Micropropagation through somatic embryogenesis has many advantages over commercial uses, horticulture, agriculture, in vitro conservation, genetic information, etc.